everyone, welcome to Asst College of Arts and Commerce. This is Asst Edupedia. I am Assistant Professor Padma Deshpande. Today I am going to cover a topic in the subject turnaround management. This is the SEM 6th subject of third year banking and insurance. So today I am going to give a brief introduction to the first chapter, that is Introduction to Turnaround Management. To start off with, first let's understand what is business. Business is a basic economic activity. It is a continuous activity which involves the production and distribution of goods and services with the main aim of earning profit and satisfaction of human wants. But there is a risk of uncertainty that may arise. So ये बिजनेस क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि टर्न अराउंड मैनेजमेंट क्या होता है. टर्न अराउंड मैनेजमेंट ये बेसिकली बिजनेस फॉर्म से एसोसिएटेड है एंड टर्न अराउंड मैनेजमेंट मीन्स एक बिजनेस आके कौन से चीज़ों से जाती है एंड बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हाउ इट कैन बी रिजॉल्व. ऑल दिस थिंग्स गेट्स कवर्ड अंडर द टर्न अराउंड मैनेजमेंट. So to understand turnaround management, first thing is we should be clear with the basic concepts of business. So business क्या है? It's a continuous activity. इसमें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और इसमें एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है एंड देयर इज अ प्रॉफिट इन्वॉल्व. और बिजनेस क्यों किया जाता है? टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. सो देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ बिजनेस. फर्स्ट थिंग इज इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी. कोई भी ट्रेड जो होता है वो एक बार किया बस खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है. देन देयर इज इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, बिजनेस होता है तो प्रॉफिट जनरेट होता है, लोगों को सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, प्रॉफिट से बिजनेस और बढ़ाया जा सकता है एंड कंपनीज आके टैक्सेस पे करती हैं. सो गवर्नमेंट को अर्निंग होता है. सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट इन्वॉल्व्स production and distribution and it can be for goods and services. कुछ गुड्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आके मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसको सेल किया जाता है. वैसे ही कुछ सर्विसेज भी हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस है. बैंकिंग इज ऑल्सो बिजनेस. इंश्योरेंस ये एक बिजनेस है. तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ ऑल इंटेंजिबल, मतलब इसमें आप सर्विसेज लेते हो तो सर्विसेज का भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो यहाँ पे देयर इज इट इन्वॉल्व्स गुड्स एंड सर्विसेज and the main aim is for any businesses to earn a profit. There is a risk and uncertainty involved. Then business is always objective oriented. What is the objective? Basically to earn profit, to increase the growth, to improve the business, to have growth of the business, to have more customers. So all these are the objectives. And कोई भी business like business कहाँ से आता है? तो बेसिकली इट इज़ फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ ह्यूमन वांट. जैसे बिजनेस ट्रेड डेवलप होते गया तो इट वाज फेल्ट नेसेसरी दैट देयर शुड बी बैंकिंग फैसिलिटीज शुड बी देयर फॉर मेकिंग द पेमेंट्स इजी. देन अभी रिसेंट टाइम्स में वी सी दैट लॉट ऑफ पेमेंट्स वी आर डूइंग इट ऑनलाइन. सो थ्रू जीपे एंड फ़ोन पे वगैरह ये ऐप्स आ गए हैं. सो ये सब एक मोबाइल वॉलेट्स के जैसे यूज़ हो रहे हैं. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है ह्यूमन बींग्स के वांट्स भी चेंज होते जा रहे हैं. पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से चीज़ें करते थे, अभी विद द चेंज इन टाइम मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं. सो इट इज़ सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द टोटल एनवायरनमेंट. बिजनेस जो होता है वो आके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो देश की प्रगति के लिए इट हेल्प्स इन इनकम जनरेशन फॉर द सेल्फ. it creates employment generation for self and others. Then through business we can use the resources. जहाँ पे भी बिजनेस ट्रेड सेटअप होता है वहाँ पे जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं दैट गेट्स डेवलप. सो रीजनल डेवलपमेंट हैपन्स. it provides revenue to the government. Then wherever businesses are set up तो आस
पास में what happens is the localities get developed, like infrastructure wise roads get developed, hospitals are set up, township gets set up, people come to stay over there, so school, colleges, community centers come up, hospitals come up. So basically it involves it helps in the development of the region also. It encourages new research and development, and always in business there has to be some innovation is always there. Either the product goes through an innovation, or the process goes through an innovation, or the methods of some or the other changes have to be made to the existing product or services. Now these concepts, which I am going to tell you about, these concepts you have already done in your 11th standard in your OC subject, 11th and 12th standard. Basically it is the basic concepts of business, like कौन से type of business forms होते हैं. So we have seen sole trading business, then joint stock companies there. So let's have a brief recap of these topics. In sole trading companies, sole trading concern, it is one of the most simplest form. There is only one person is there, he can easily set up the business, his capital requirement is low, the formalities are also very limited, there is no separate tax return have to be filed. Whatever the sole proprietor का जो personal income जो होता है वही वो tax return करके वो फाइल कर सकते हैं, एंड इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसेस एंड वेरी इजी टू मैनेज एंड टेक केयर ऑफ. इसके लिमिटेशंस काफ़ी सारे हैं यहाँ पे. देर इज़ नो सेपरेट स्पेशलाइजेशन और द एक्सपांशन फैसिलिटी इज़ ऑल्सो लिमिटेड, बिकॉज एक ही पर्सन अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है. सो लिमिटेशन ऑफ कैपिटल इज़ देयर. लाइबिलिटी ऑब्वियसली वन सिंगल पर्सन इज़ हैंडलिंग, सो हिज लाइबिलिटी इज़ कंप्लीट, एंड उसका जो लाइबिलिटी जो होता है वो सोल प्रोप्राइटर का होल एंड सोल लाइबिलिटी होता है. बिजनेस जब तक वो प्रोप्राइटर है, स्मूथली बिजनेस रन कर पा रहा है, तब तक स्टेबिलिटी होती है. इट्स अ वन मैन शो. Tax benefits also for a sole proprietor are very less. There is high risk involved, and in case of death of the sole proprietor, the business may have to be wind off, or it may have to close down. Then it is not suitable for larger organizations, and the scope of the business is also very limited. The second form of business is a partnership firm. So partnership firm, the minimum number of members in a partnership is 2. So it is framed under the Indian Partnership Act. It is also easy to start and dissolve. More than the sole proprietorship, here the capital is more, division of specialization happens. Then यहाँ पे there is a personal contact with the customers. Then management and control is also easy. More scope for innovations is there. It is said na, if more people are there, then more number of specializations, more number of ideas, more number of capital, everything can be there. There is an agreement between the partners which is written, and they follow all the rules of the Partnership Act 1932. Of course this also has limitations, like यहाँ पे the partners की liability जो होती है it becomes unlimited, उनका personal property gets attached to the business, so unlimited liability हो जाती है. यहाँ पे भी there is no, apart from the registration, there is no legal entity, and in case a partner dies, the business has to be dissolved. Here also the number, depending on the number of members, the capital is there. There are chances of conflicts and disputes between the partners. Business secrecy cannot be maintained, क्योंकि partners में तो share करना ही है information को. बहुत बार decision making में delays हो सकते हैं. Flexibility in operation is also limited, and in case many times अगर कोई legal issues होता है तो all the partners will get entangled in that legal issue, and the shares or transfer is not possible, and even if it has to be done, then the consent of all the partners needs to be taken, which is again a long procedure. The third format is known as a limited liability company, which is a combination between partnership and एक ये जो बोलते हैं ना कि एक joint stock company का जैसा रोल होता है, तो limited liability partnership is one format. इसमें क्या होता है कि it is more than the partnership form. यहाँ पे जो scope जो होता है it is more than the partnership,
एंड लेस देन द जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो रूल्स होते हैं. सो इसमें क्या है, एक कंपनी एंड अ पर्सन कैन form a agreement, they can come under an agreement and they can form a LLP, that is limited liability partnership. तो इसमें क्या है, the word LLP has to be specifically put after the name of that once the business is registered. तो इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे हमने पार्टनरशिप में देखा है कि पार्टनरशिप में द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, मीन्स in case of any legal issues or anything, the personal property of the partners also gets involved, but in case of LLP it is not so, it is limited. So there are certain merits to this. Obviously more capital can be invested, specialization can be there, division of labor is there, then management and control can be shared, more easy to form, more scope for innovation, startup cost is low, and the liability of the partners is limited, and this gets registered as an LLP. इसके कुछ disadvantages है. First thing is it also lacks legal entity, limited liability of the partners होने के वजह से there is not much scope of business can dissolve, conflicts can take place, and सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें ये है कि ऑल द स्टेट्स डू नॉट अलाउ LLP पार्टनरशिप, इट इज़ अलाउड ओनली इन अ फ्यू स्टेट्स इन इंडिया, एंड इन केस LLP होता है तो उसमें FDIs भी पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स LLP में नहीं हो सकती हैं, एंड अगर ये बेसिकली इंडियन रेजिडेंट्स के थ्रू इसमें ही ये रजिस्ट्रेशन एज एन LLP हो सकता है. Then the next format is the joint stock company. So it is an artificial association of persons, and it has a legal separate entity. It is an voluntary association. इसमें कैसे है कि people have to take buy the shares, then only they get the ownership rights. So यहाँ पे pooling of funds होता है, so large capital is available. इट इज़ अ कंटिन्यूस परसेप्चुअल सक्सेशन है, यानी कि कोई पार्टनर या कोई ओनर की डेथ हो जाने से ये इसका जो ये रहता है सक्सेशन जो रहता है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, बिजनेस कंटिन्यूस. इट हैज़ गॉट अ लीगल एंटिटी, इट गेट्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, देन द चांसेस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज देयर, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज limited, the company has a common seal, the management is done by separate people, there is a division of labor, specialization हो जाता है, management is done by the board of directors and the selected representatives who are appointed by the shareholders, and this is suitable for very large scale of business, जैसे कि रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, these are all large business concerns. तो यहाँ पे इनका ऑपरेशंस यूज होता है, यहाँ पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अपॉइंटेड एंड दे टेक केयर ऑफ द डे टू डे बिजनेस ऑफ द कंपनी. देन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है. फर्स्ट इज देयर इज अ लेंथी प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन, then obviously since more number of people are involved there is lack of secrecy, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं. देन देर इज़ अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनर्स कोई और होते हैं एंड डे टू डे ऑपरेशंस करने वाले और होते हैं. So there is a separation of ownership and control, then there is a delay in decision making, then there is a problem of conflicts between the shareholders and the board of directors. ये काफ़ी टाइम होता है कि शेयर होल्डर्स जो बताते हैं दैट इज़ नॉट फॉलोड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर देर आर चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशंस अंडर द टेबल, लाइक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं वो मिसमैनेज करते हैं. सो देन काफ़ी टाइम द शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो मतलब बहुत बार उसको निग्लेक्ट किया जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द demerits of joint stock company. Now there are some more formats of the different businesses, and what is the impact of globalization, liberalization and various policies that has impacted business. This we will be seeing in my next video. Till then, stay connected, stay safe. Thank you.